In previous lecture, we have completed the basic sound like a. This is a, e, u, ए, ओ. सो हमने साउंड समझ लिए और हमने स्ट्रोक ऑर्डर भी समझ लिया था कुछ कैरेक्टर्स का, इन्हीं का समझा था. और इसके अलावा हमने ना का भी जो ना सीरीज़ थी उसका स्ट्रोक ऑर्डर समझ लिया था. तो आज हम करने वाले हैं का सीरीज़ और सा सीरीज़. दो सीरीज़ के स्ट्रोक ऑर्डर समझने हमें. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटर का. ओके. इस लेटर को हम क्या बोलते हैं? का. So the stroke order of ka is something like this. First you will draw this one, after that this one, and then this one. This is the stroke order. So if I wanted to write ka, so I'll write something like this. This is ka. Okay. So if I combine a and ka together, that means red. That means red. Okay. Next word is key. Next word is key. Okay. So if I wanted to write key, so the stroke order for key is, first you will make this stroke, then this one, and the last one is this. Something like this. First, second, and third. Okay. So what is this? This is key. Okay. The next one is ku. What it is? Ku. So it is a very easy character and it contains only one stroke, as you can see here. Just have to start this and this became ku. और ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के सिंबल जो मोर और लेस है उसकी तरह भी शो करता है. नेक्स्ट वर्ड इज का, की, कु, को, के, को. दिस इज के. सो फॉर द के you have to make this first, and the next stroke is this one, and the last one, third one. So this is first, this is second, and this is third. So something like this, second and this third, again second, third. Okay. So this is K. The last one is ko. The last one is ko. Okay. So K is simple and two stroke character. You just have to make one and then the second. So first one and the second one. This is ko. So this is the का सीरीज़. ये का सीरीज़ के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया. ओके. सो नेक्स्ट वन इज सा. Okay, so the next one is sa. Sa is somewhere similar to key. If you see in sa and key, there's just one stroke which is different from in both of them. So what do you have to do? Just have to, it's simple. First you have to make this, then this. Okay. So it's a two stroke character like this. Okay. Again, if you wanted to make it, oh sorry, this. Okay. Next is, it is sa. नेक्स्ट इज, हम सा सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो अगर हम का सीरीज़ में देखें तो पहले का आता है फिर की आता है. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था, लेकिन सी नहीं है. ये क्या है? ये क्या? शी है. क्या है? शी. इट्स नॉट सी, इट्स शी. ठीक है. आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा ये कि वन स्ट्रोक कैरेक्टर है जिसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? शी. इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक लगता है, उसी एक स्ट्रोक में आप कंप्लीट करते हैं इस कैरेक्टर को. समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके. सो इट इज़ शी. नेक्स्ट वन इज सू. ओके.
Next one is su. So this is first character stroke, and this is second stroke. So first stroke, then second stroke. If I add su with ki, तो बनता है suki, which means like. Okay, which means like. Suki means like. Next is say. It is say, and the last one is so. Okay, so if you wanted to make say, so the first character is the first stroke is this one, the second is this, and the third is this. It's somewhere like हिंदी वर्ड ए. हिंदी में जो ए होता है आप ए बनाते हैं उसी की तरह ए कहीं ना कहीं दिखता है. ओके, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये फर्स्ट स्ट्रोक लगाना है, देन सेकंड एंड देन थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. Okay, so this is say, and the last one is so. So is a one stroke character. You have to complete it in one stroke, something like this, something like this. Okay, so it's a one stroke character. So we have completed the na series, the ka series and the sa series, and अपने a e u a o तो कर ही लिया. This is for this lecture. So それでは皆さんまた会いましょう. Thank you.